Hello students, let us continue exercise 4.4 question 2. Solve the following. First, the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? So students, these statements we have already done in exercise 4.1. So we will write down in a very short manner. तो क्या कहा है? टीचर्स कह रहे हैं हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास. एक स्टूडेंट है, उसकी क्लास में उसकी क्लास में उसको सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं. वो कितने हैं? इट इज द ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 1. तो जिसको लोएस्ट मार्क्स आए हैं उसका ट्वाइस मीन्स डबल करेंगे, उसमें प्लस 7 करेंगे तो वो हाईएस्ट मार्क्स होगा. और हाईएस्ट स्कोर है वो कितना है? 87. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन. ओके, 4.4 क्वेश्चन 2. लेट द लोएस्ट मार्क्स इन द क्लास बी x. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन twice the lowest mark plus 7. So twice the lowest mark plus 7 is equal to highest score, and highest score is given to us 87. Okay, now we got the equation. Let us solve it. 2x. Okay, so students, first of all change the side of 7. It will go in other side. The plus 7 will be minus 7. So 2x is equal to, first of all write down 87, then minus 7. That is called transport. Okay, plus 7 will be minus 7. Now 2x is equal to 87 minus 7 is equal to 80. x is equal to 80 upon 2. Because 2 है यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके साइड चेंज करेंगे तो वो अपॉन में चला जाएगा. 80 upon 2. Now x is equal to 40. 42 is 80, 2 cut. The answer is 40. Next, B. In an isosceles triangle, the base angles are equal. The vertex angle is 40 degree. What are the base angles of the triangle? Remember, the sum of three angles of a triangle is 180. This type of sum we have already done in exercise 4.1. But in that sum, vertex is not given. Okay, but here vertex is given to us 40 degree. And now we want to find out the base angles. Let us solve it. B. Answer. Let ABC be an isosceles triangle. So first of all give the name to the triangle. Triangle, isosceles triangle ABC, whose base angles are equal and of measure x degree. Okay, so let me draw triangle. Okay, isosceles triangle. So vertex angle is given to us 40. तो ये 40 डिग्री का एंगल हुआ. अब ये एंगल दोनों इक्वल है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेस एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी एंगल x होगा और ये भी x होगा. एंड इन द हिंट इज गिवन टू अस द सम ऑफ three angles of a triangle is 180 degree, right? Now angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 according to angle sum property. A is equal to 40 given A, B and C. Okay, now angle A 40, B and C we have supposed x, so x degree plus x degree is equal to 180 degree. x 2x, 40 plus 2x is equal to 180. Change the side of 40. 2x is equal to 180 minus 40. Now x separate. 180 minus 40 is equal to 140. 2 is in multiply with x. Change the side of 2. It will go in divide. 140 divided by 2. 72 is 140. 2 cut. X is equal to 70. So the base angle is 70 degree. 70 degree, 70 degree. Okay. Next, C. Sachin scored twice as many runs as Rahul. Together, their runs fell too short of a double century.
how many runs did each one score? So students, this question we have already solved in exercise 4.1, right? Let us solve. Now we have to find out the solution. Equation we know. Sachin scored twice as many runs as Rahul. Okay, let us solve it. See, let runs scored by Rahul be x and runs scored by Sachin 2x, twice the Rahul, right? Now, the sum of their runs be too short of double century. X plus 2x plus 2 is equal to 200. Now, students listen. ये इक्वेशन कैसे बनेगा? The sum of their runs be too short. तो पहले तो उन दोनों का सम करना है रन्स का. तो जो राहुल की रन है वो x, सचिन की रन है 2x. अब यहाँ पे क्या लिखा है? टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी. तो डबल सेंचुरी मीन्स होगा 200. ओके, अब उसमें टू शॉर्ट मीन्स 2 रन्स कम पड़ रहे हैं. 2 रन्स कम पड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना है? +2. ओके, सो द सम ऑफ देयर रन्स, इट मीन्स x plus 2x, be too short +2 double century is equal to 200. Okay, in this way we have to solve this. Sorry, this was not from the exercise 4.1. Okay, now x 2x 3x plus 2 is equal to 200. Okay, now 3x plus 2 will be -2. 3x is equal to 200 minus 2 is equal to 198. Now x is equal to 198 upon 3, because यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 है, उसकी साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में. 6 इज इक्वल टू आएगा, x इज इक्वल टू आएगा 66, बिकॉज 66 इंटू 3 करेंगे तो 198 आएगा. 3 कट. ओके, सो द x इज इक्वल टू 66. आई होप यू अंडरस्टूड इट. थैंक्स.